जय आदिवासी जय जोहार साथियों। आज हम आ चुके हैं एक बेहद खूबसूरत जगह चिवटीबारी वाटरफॉल पर। सच बताऊं, मुझे भी आज तक इस जगह के बारे में पता नहीं था। मेरे साथ आए विक्की भाई ने मुझे शानदार जगह के बारे में बताया, इसलिए सोचा कि आप सभी के लिए एक छोटा सा ब्लॉग ही बनाया जाए। दोस्तों, यहाँ का नज़ारा इतना शानदार है कि दिल खुश हो जाता है। सबसे खास बात यही है कि यहाँ दो बड़े झरने एक साथ गिरते हैं, जिन्हें देखकर मन खुश हो जाता है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरियाली और घना जंगल इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते। यही जगह अभी भी बहुत कम लोगों को पता है। जिसे चिमटीबारी वाटरफॉल के बारे में जानकारी है, वो ही यहाँ घूमने आता है। तो दोस्तों, आप ही बताइए कि आप चिमटीबारी वाटरफॉल घूमने कब आने वाले हैं। हमें कमेंट जरूर करें। एक फक्त एन कितना अंगूर है कि देखा ही है ना हम आप भी आना ऐसे ओए पोती कोई नहीं इनसे कहते हैं। हाय गाइस, हम आए हैं चिवटीबारी, जो कि पिंपलनर से 20-25 किलोमीटर है। यहाँ का नज़ारा देख लीजिए चिवटीबारी का। दबदबा और घूमना हो तो आ सकते हो। बहुत ही बढ़िया नज़ारा है दोस्तों। अगर आप भी चिमटीबारी वाटरफॉल घूमने आना चाहते हैं तो नंदुरबार से अक्कलकुआ की तरफ से आने वाले लोगों को पहले पिंपलनेर पहुंचना होगा। वहां वारसा रोड से चिमटीबारी जाना पड़ता है। Anything more, want to do this for you wholeheartedly. They will come, they will come, like the sun, like the sun. They will be, they will be everything. Everything can't really be enticed, although it's very nice. In my space I feel most comfortable. Choose what you like, choose your people, choose your time, choose to be vibrant, choose to feel yourself, choose to transcend, choose to be your own friend. Yeah, they will come, they will come, like the sun, like the sun. तो साथियों, जिसको भी ये नज़ारा देखना हो तो आप आ सकते हो। और बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। सुपर ऐसा स्पॉट है देखने के लिए। जिसको भी आना हो वो आ सकता है। Everything, everything, they will come, they will come, like the sun, like the sun. They will be, they will be everything, everything.